Hello friends, I am Manoj Kumar Behra, subject expert mechanics from MKD Education. I do welcome you to this innovative project which is providing your diploma education in a digital platform. That means you can access all the course material, all the video classes, previous year question and answer solution, coming examination VSTs in your hand at any time you want. Today we'll discuss some new aspects about lifting machine. Previously in my class we have discussed what is a lifting machine, what is its concept and some terms related to your lifting machines. Today we will discuss reversibility of a lifting machine, self-locking of a lifting machine, and we will solve a numerical problem. Okay, without wasting any more time, let's move. So dear students, you might have experienced some kind of machines where after removal of the effort the load gradually or eventually will alight. माने आम एफर्ट टाक काढ़ीदे कौन हम लोडटा आम जी लोड टाक टेकिथु ऑटोमेटिकली से कौन हम तलक 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 पड़े आसो कौनटा लोडटा ताकू कौन कहती से टाइप मशीन को रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए मशीन माने आमे गोटे लिफ्टिंग मशीन रे किछि एफर्ट दे कि लोड टाक टेकिबु एंड द वेरी मोमेंट व्हेन यू स्टॉप एडिंग योर एफर्ट माने जो मोमेंट रे तमे एफर्ट दबनी एफर्ट टाक काढी आनिबो ऑटोमेटिकली जो लोडटा टेकी ही जाइथिबो से कोन हबो ग्रेजुअली तळक तळक पुणी ओरिजिनल जगह को खसी आसीबो व्हाई दिस हैपेंस it happens because when that machine will be having no friction जदि से machine रे किछि friction न थिबो तो हमें ताको जेमिति टेकी थिबु जति एफर्ट देकी एफर्ट काढी आनले पुणी कोन हबो से ऑटोमेटिकली तळक पळि आसीबो काहे कि ता फ्रिक्शन सेठी न थाए तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन ही नथिबो बोली कि से तळक खसी आसे that condition is known as reversibility of a machine. See here a machine performs work in reverse direction after removal of the effort is called reversible, otherwise it is self locking. तो जो machine टारे आमे कोन कोले एफर्ट देलु लोड टा रेज हला लोड उठिला तापर आमे एफर्ट काढी आनी सला परे स्टिल जदि लोड टा तळकु आस्ते आपे आपे न खसिला दैट मशीन इज नोन एज सेल्फ लॉकिंग मशीन माने से लोड टा तळकु खसिबो नाही एंड दैट हैपेंस ड्यू टू मशीन फ्रिक्शन मशीन रे फ्रिक्शन अधिक थाय बोली कि लोड टा को से सेमिते टेकी कि धरि था जदियो तमे कोन करथाउ एफर्ट टा काढी कि नेकी पळे आसी था सो रिवर्सिबिलिटी एंड सेल्फ लॉकिंग आर रिवर्स और आर इनवर्स रिलेटेड जो मशीन टा ऑटोमेटिकली तळकु खसी आसुची लोड टा को तळकु नै आसुची आमे एफर्ट काढी सला पर दैट इज रिवर्सिबल मशीन एंड जो मशीन रा आमे लोड टेकी सला पर एफर्ट को काढी आनी सला पर से सेमते रखी थाए तळकु खसेनी दैट इज सेल्फ लॉकिंग मशीन हियर इट इज मेंशनड द अमाउंट ऑफ लोड लिफ्टेड बाय कॉरेस्पोंडिंग एफर्ट रिक्वायर्ड आर related by a law called law of machine. We'll discuss that law of machine. Okay, we have next outcome of this class. A class outcome come at the outset of this class student can know about reversibility which I will discuss, self locking I will to discuss, law of machine and finally we'll solve a simple numerical problem. Okay, let me tell you one more thing, that is, see, this is a kind of machine, this is a lifting machine. ये lifting machine रे कोन होची, this is known as screw jack. You might have experienced, you might have seen in your day to day life. प्रति कार रे, ट्रक रे, बस रे, व्हीकल रे आमे कोन करू जतले टायर पंक्चर हे जाय ताकू आमे टेकीबा पई एई स्क्रू जैक ही आमे यूज करू स्क्रू जैक ही यूज करा कोनती स्क्रू जैक. दिस इज अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन. हियर एठी हम कोन करू ओटे जैक रॉड जाकू आमे ओडिया रे कहूछु जग रॉड, दैट इज एक्चुअली नॉट जग रॉड, दैट इज जैक रॉड बिकॉज़ दिस सिंपल लिफ्टिंग मशीन इज नोन एज स्क्रू जैक. Here screws are there and this machine is jack machine, so this is a screw jack machine.
आमे कोन करू ए जो होल अछि ए होल रे आमे जे रड टाको पुरै की ताको तले बुलेबू ए जो प्लेटफॉर्म अछि आ ऊपर लोड थाए तो से ऑटोमेटिकली कोन हुए स्क्रू टा अनविंड हुए ए सला पर लोड टा ऊपर को उठी उठी जाए ता प्रिंसिपल सेटा जते बेले आमे कोन करिवु रड टाको काढी आनिबू हमर जते बेले दरकार रिक्वायरमेंट अनुसार तो कोन होची तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए मशीन कोन कहितली जे आमे कोन कोलु गोटे किछि वेट को ए प्लेटफॉर्म रे थोइलु तापर आमे ताकू रड रे ताकू बुलेले कोन हबो ए प्लेटफॉर्म टा ऊपर को उठी गला ठीक अछि एबे आमे जदी प्लान करिवु जे रड टा को आमे काढी आनलु दैट इज रिमूवल ऑफ एफर्ट काढी आनी सल्ला परे जदी से जत्ते पर्यंत उठी थिबो से लोड टा जदी ऑटोमेटिकली से विंड ही का तळु को पळे आसला that will be termed as reversibility of that machine माने हम एफर्ट काढी आनले ऑटोमेटिकली से कोन हबो तळु को जदी पळे आसीबो ड्यू टू नो फ्रिक्शन यदि फ्रिक्शन नथिबो स्क्रू आ भितरे सरफेस भितरे ताले से ऑटोमेटिकली तळु को पळे आसीबो ऑटोमेटिकली आफ्टर रिमूवल ऑफ द एफर्ट द लोड lowers itself तो से केस रे हम आपको कोन कहबो रिवर्सिबल मशीन क्लियर आ जदी हमें कोन कलु जे एठु तळु ए प्लेटफॉर्म ऊपर सपोज दिस प्लेटफॉर्म इज हियर प्लेस्ड हियर ए प्लेटफॉर्म टा एटी अछि हमें किछि लोड ऊपर थोइलु तापर ताको कोन रड बुले की ताको बुले ऊपर उठेलु उठी साला पर जे हमें एफर्ट आ काढी आनलु माने आ एफर्ट दबुनी हमें आ बुलेबुनी रड टा काढी आनलु जदी सेम पोजीशन रे रहिला हमें एफर्ट काढी आनी साला परे बी जदी सेही प्लेटफॉर्म रे सेही पोजीशन रे लोड टा रहिबो तळु को आसीबोनी इन दैट केस we will describe that machine to be self locking automatically se lock है कि रही जाउची therefore this term happens self locking machine काहे कि self locking होची because it is screw आउ जो आर inner surface जाकर inner surface भीतर फ्रिक्शन थाई बोली से कोन को लॉक करके रखि दे जो पोजीशन रे हमें एफर्ट काढी आनी तो से पोजीशन से थिबो आ तळ को खसिबोनी ऑटोमेटिकली वॉलंटरली से कंडीशन तो हम कोन कहबो self locking of the machine and so this condition of reversibility में कहि देले बे reversibility machine कोन if automatically the load lowers downward after the removal of the effort is that condition is reversibility and if automatically the load does not lower itself after the removal of the effort that condition will be termed as self locking machine. Now we will discuss condition of reversibility. What is the condition of reversibility? Okay, let's move to the our whiteboard. What are the condition of reversibility? See, you might be facing a question relating to condition of reversibility, maybe a 5 marks question. So I wish you all look into this whiteboard carefully. Mo katha ko bhi carefully sunibo. Now see what happens. We know W is the load to be lifted, P is the effort to be applied माने P effort हम दबु W load टा कोन हबो ऊपर को उठिबो Y is the distance moved by the effort and X is the distance moved by the load ये सब हमें प्रीवियस क्लास रे हमें जानी छु so here again we know from our previous class you may refer my previous class video class notes by browsing www.mkdeducation.com सेतरे पूरा टोटल देखियबा so previously we have discussed our input to the machine is effort applied and distance through which the effort is moved previously मैं कहि and output कोन
output by the machine is load into distance through which the load is raised, माने से केते डिस्टेंस ऊपर को से लोड टेका जायछि and load itself, magnitude of load. Here we may analyze, see जो मशीन रे किछि फ्रिक्शन थिबो सेठी रे हमर कोन हबो, इनपुट to the machine will be equal to machine friction plus output. सी ए जिनसटा को भलो की केयरफुली देखो कोन होची, आमे जेति की इनपुट दबु से मशीन को, जेति की एफर्ट दबु, जेति की इनपुट से मशीन को दबु, इनपुट देले से कोन करबो, आउटपुट प्रोड्यूस करबो। तो जेति की अमाउंट रे आमे इनपुट दउछु मशीन को, सेथिरे किछि अमाउंट रो इनपुटटा कोन होची फ्रिक्शन पई एब्जॉर्ब हे होची, आ रेस्ट का कोन होची हमर आउटपुट बाहरची, माने इनपुट टा भाग भाग हे होची, किछि अमाउंट फ्रिक्शन पई सेतरे एब्जॉर्ब हे होची इनपुट, आ किछि इनपुट टा कन्वर्ट हे होची काकू आउटपुट को। फ्रॉम दिस रिलेशन आमे तो ए रिलेशन कोन पाइबो जे ए रिलेशन को आमे कोन पाइबो जे, सो मशीन फ्रिक्शन ताले कोन हे जीवो, मशीन फ्रिक्शन मींस effort required to overcome machine friction. ए फ्रिक्शन को हमें ओवरकम करे पे केते की एफर्ट वेस्टेज होची, that friction will be equal to input minus output, input minus clear। देखो एठी जदी इनपुट इज इक्वल टू मशीन फ्रिक्शन प्लस आउटपुट, सो मशीन फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, clear। Now see one more thing is, if this is the machine friction, जो मशीन रे कोन हेतिबो फ्रिक्शन नथिबो, जो मशीन रे फ्रिक्शन नथिबो से मशीन रे कोन होबो, इन केस ऑफ आइडियल मशीन no friction is there। see let me tell you one more thing, सो जो मशीन रे मशीन फ्रिक्शन नथिबो माने रिवर्सिबल मशीन, इन केस ऑफ रिवर्सिबल मशीन रे कोन हुए जे जेहेतु सेठी फ्रिक्शन न थाए तो कोन हुए, लोड टा जतले हमें टेकी देथाउ तो लोड जतले हमें एफर्ट टा को काढी आनु सेतले कोन हुए, लोड टा एते अधिक थाए जे फ्रिक्शन न थाए से ऑटोमेटिक कोन हुए जे तोळ को पळे आसे। इन रिवर्सिबल मशीन either the friction is very less or there is no friction, so कोन हुए, in case of reversible machine what happens, the load or output is greater than machine friction, output is greater than machine friction। we know output is our W into X, which is equal to machine friction is input minus output, your input is P into Y minus output is W into X, clear। our in case of reversible machine output is more than the machine friction, सेथि पई कोन हुए आउटपुट टा तळकु खसी आसे, काना फ्रिक्शन टा कम थाय बोली, यदि फ्रिक्शन अधिक थांता आउटपुट तळकु खसंता नाही, तो आउटपुट इज मोर देन मशीन फ्रिक्शन, therefore putting the mathematical expressional value that is W into X is more than P into Y, that is input, and W into X that is output, implies that W into X will be added to this W into X, that is 2W into X is equal to P into Y, implies that W into X by P into Y is equal to half, implies that, now see W into X divided by P into Y, this is W by P divided by Y by X,
that is MA divided by VR. केमिति हला? That is 1/2 which is equal to 0.5 or implies that our efficiency in case of reversible machine is more than 50%. ताले एथिरु हमें कंक्लूड कोन हेलु जे रिवर्सिबल मशीन रो एफिशिएंसी टा always more than 50% or the machine which is having efficiency more than 50% will be termed as reversible machine. Here now see you might have some doubt here. See W into X divided by P into Y, that means W by P divided by Y by X. So W by P is MA mechanical advantages divided by Y by X is your velocity ratio, which I have told you in my previous class. You may refer to my previous class. So finally we got efficiency of a reversible machine is more than 50%. But from this relation we can also conclude in case of a self locking machine, जो machine टा self locking सेथिर ताले efficiency केते होथिबो, let me tell you. Efficiency of a self locking machine is less than 50%. 50% गोटे machine रो efficiency तो 50% रो अधिक हो जाए सेतल हेटा को हमें reversible machine कहि परिबा. आ 50% रो तळ को हेले that is self locking. That means after removal of the effort that load will not move downward automatically, will not be lowered automatically or voluntarily due to machine friction is there. Clear? So this is all about reversibility of the machine, self locking of the machine and